Dear student, welcome back to the next unit. We will discuss the next unit philosophy of market models. In this unit, we will discuss what is the meaning of philosophy of market model and what are the content we will discuss. The creating the trading arrangement to exchange a commodity called electrical energy adds complexity to the overall process of generating and transferring the same to the end customer. Deviating from a vertically integrated structure toward unbundled operation require structural and constitutional changes. This is true for any commodity market that is undergoing the paradigm change. In this unit, we will discuss various market models for trading of electricity and the need of designing the same. Eventually, we will answer the following important questions. What are the possible ways in which buyer and seller can trade electrical energy? Which section of consumers has a choice of selecting their energy provider? What are the peculiar of electricity that make market arrangement of this commodity different from other commodities? इस फिलॉसफी ऑफ मार्केट मॉडल इस यूनिट के अंदर बेसिकली वी विल डिस्कस द किस तरह के मार्केट मॉडल्स जो कि पहले वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम था उसे अनबंडल्ड कर दिया गया है। उसके बाद कौन कौन से मार्केट मॉडल हैं, बायर और सेलर कौन कौन से मार्केट मॉडल का यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर के पास ऐसे कौन कौन से सेक्शन होते हैं जहाँ से ही कैन सेलेक्ट द एनर्जी प्रोवाइडर। Philosophy of market model is influenced by the multiple ways in which the above question can be answered. In this unit, first we explain choices of industry, structure for trading of electricity. इस यूनिट के अंदर सबसे पहले we will discuss the किस तरह के मार्केट मॉडल को we can select. Next we present the peculiarity associated with the electricity and discuss how these characteristics influence the market design. और इनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये मार्केट डिजाइन को किस तरह से इफेक्ट करती है। We will discuss the market model based on contractual arrangement. There are 4 types of model: monopoly model, single buyer model, wholesale competition model, retail competition model. Unbundling of the conventional vertically integrated power system create groups of various commercial and technical activities. Since one of the major aim of deregulation is introduction of competition, it is worthwhile to explore every avenue where competition can be introduced. जो हम लोगों ने मार्केट को अनबंडल किया, डीरेगुलेटेड किया, उसका मेन एम है मार्केट के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करना। इवेंचुअली कंपटीशन प्रोवाइड ए चॉइस फॉर एंटिटीज टू चूज अनदर एंटिटी और ए ग्रुप ऑफ एंटिटी टू डू प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन। जब कंपटीशन मार्केट के अंदर ज़्यादा होगा तो बायर और सेलर दोनों के पास चॉइसेस होंगी ज़्यादा। ही कैन सेलेक्ट more entities for the buying or purchasing the electricity. In electricity variance, either the load or an entity representing a group of load get a choice to select its energy provider, or they may exist some mechanism which would cater to the electrical energy need to these load at a competitive level. The former mechanism essentially require bilateral involvement in the entities who wish to get into a power buyer and seller contract. In this, the seller and buyer mutually agree upon the terms and condition, including the price and time of delivery. जो कम्पिटिटिव मॉडल है, डीरेगुलेटेड मॉडल है, उसके अंदर बायर और सेलर आपस में एक
should agree upon the terms and condition, जिससे कि they can including the price and time of delivery. A repetitive bilateral interaction between buyers and seller may lead to an equilibrium point where everyone is happy. Alternatively, a similar result would be obtained if a common exchange for the community is set up where buyer and seller, instead of interacting with each other, communicate their expectation to this marketplace. This represents a simultaneous market clearing process, a common market price of electricity commodity. और इस डीरेगुलेटेड मार्केट के अंदर या या तो हम लोग कह सकते हैं कि बायर और सेलर आपस में दे विल इंटरेक्ट, या एक ऐसा मार्केट प्लेस हो यहाँ पर कि दोनों लोग इंटरेक्ट कर सकते हों. Which moving from a vertically integrated structure to a competitive one, various policy and the structural issues crop up. One of the important concerns is regarding the entity that should be allowed to take part in competitive activity. Similar issue of arrangement of various elements of power system. When a new set of rules is introduced to buy and sell power also need to be addressed. It is obvious that the commercial arrangement and virtual boundaries between various functional entities can take many shapes and forms. Consequently, various models can be classified according to the levels at which the entities are given to choice of buying or selling electricity. इस यूनिट के अंदर वी विल डिस्कस द 4 तरह के मॉडल हैं जिसके अंदर वायर और सेलर सेलेक्ट कर सकते हैं. मोनोपोली मॉडल है, सिंगल वायर मॉडल है, होलसेल कंपटीशन मॉडल है, रिटेल कंपटीशन मॉडल है. वेरियस ट्रेडिंग मॉडल्स कैन बी प्रपोज्ड बेस्ड ऑन द above discussion. The choice of choosing a model is a policy discussion is dominated by various prevailing conditions. They need to be accounted for before making structure changes. For basic model of industry structure are suggested. इन मॉडल को जो हम लोगों ने मार्केट के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करना है और बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर सकें, यहाँ पर एक एग्रीमेंट इंक्लूडिंग प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी दे कैन सेट. इस तरह के मॉडल के बेस पर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दिस टाइप ऑफ 4 मॉडल. थैंक यू.